Hello everyone and welcome back to my channel. You know, Article 1 of the Indian Constitution clearly states India, that is Bharat, shall be a union of states. But wait, have you ever wondered why does it say union of states and not federation of states? So interestingly, if you go through the Indian Constitution and find out, nowhere, कोउठे भी आमे पाइबानी फेडरल स्टेट और फेडरेशन शब्दर व्यवहार. Nowhere we find the term federation and federal state. So it मन गोटे big question आसे. Did our constitution makers forget to use the word federation or was it a deliberate choice? So आज वीडियो रे we will uncover key federal features enshrined in our constitution जोथि पाई by which makes India a federal state. Second, reason behind avoiding the word federation, कहीं deliberately a word को use करा जाए नहीं. And third, why India is often referred to as a quasi-federal state. At last हमें डिस्कस करिबा कहीं भारत को हमें quasi-federal state कहू. So stay tuned till the end to get a clear and complete understanding of India's unique federal structure. So let's start this video. What makes India a federal country? आम ए फेडरलिज्म वीडियो सीरीज ये हूँ सेकेंड पार्ट बुक रो भी सेकेंड पार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डेलिबरेटली अवॉइड द वर्ड फेडरेशन. सो लेट्स सी. If we look at our constitution, India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after the independence, severely princely states became a part of the country. Okay, आपण माने जानी चंती जे गोटे बहुत पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन परे ही भारत गठन होईची एंड बहुत गुड़ाए प्रिंसली स्टेट्स थिले. आई थिंक मोर देन 300 प्रिंसली स्टेट्स वेर देयर जो माने कि भारत रो पार्ट होईचंती. तो एभली गोटे क्रिटिकल सिचुएशन रे आम कंट्री पाई सबुठु मोस्ट इम्पोर्टाट कनसर्न थिला भारत रो यूनिटी को इंडिया रो यूनिटी को बजाय रखिबा. ओके, टू शो दैट इंडिया इज यूनाइटेड. तो ये कंडीशन रे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लाइक डॉक्टर बी आर आंबेडकर जदि डॉक्टर बी आर आंबेडकर आमे ओपिनियन बा तांकर स्टांड कौन थिला जदि आमे कहबा अकॉर्डिंग टू हिम तांको मतरे थिला यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज टी को व्यवहार करिबा बेटर देन और प्रिफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. डॉक्टर बी आर आंबेडकर मत थिला यह जे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड जगार आमे यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज करिबा बेटर रहिबो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आ पछर कारण कोन थिला? टू मेजर रीजन्स वेर देयर. फर्स्ट वन इज द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन. आमे लास्ट वीडियो रे डिस्कस करिचे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन अंडर आमे डिस्कस करिचे जे केमिति 13 अमेरिकन कॉलोनीज जेते बेले इंडिपेंडेंट पाइथिले से माने निजो ओन विश रे आसी गोटे एग्रीमेंट करथिले गोटे स्टेट गठन पई से माने डिसीजन नेइथिले. बट भारत सेही भली फॉर्मेशन हेई नथिला. 1947 अगस्त 15 पूर्वरु आमे स्वाधीनता पाइबा पूर्वरु ही आमे बहुत यूनाइटेड थिले एंड आमे यूनाइटेडली स्ट्रगल करथिले भारत रो स्वाधीनता पई. सो Indian Federation or the Indian Union is not the result of an agreement among the states. ये बी आर आंबेडकर मत थिला. सेकेंड, द स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन. भारत रो कोनोसी भी स्टेट्स पाखरे ए अधिकार नाही जे सी इंडियन फेडरेशन रु अलगा ही गोटे सेपरेट स्टेट इन द सेंस गोटे सेपरेट कंट्री गठन करि परिबो. द फेडरेशन इज an union because it is indestructible. डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहते जे भारत जो आम कहूचे इंडिया एज ए यूनियन. ओके, ये इभली गोटे फेडरेशन जो फेडरेशन केबे भांगी पारिबो नाही व्हिच इज इनडेस्ट्रक्टेबल. सो द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल and divided into different states only for the convenience of administration. ए बी आर आंबेडकर ए ओपिनियन रू देखिले आमको यह बुझा पड़ुची जे भारत इज एन इंटीग्रल होल केवल
कन्वीनियंस दृष्टि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दृष्टि ही आम भारत को सेपरेट पार्ट रे डिवाइड करछे एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इंडिया एज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन that is kahenki the reason behind avoiding the word federation, why deliberately constitution makers mane federation word tiku avoid kartile. I hope you understood. Now let's see the second part. Now we'll discuss features of Indian constitution which makes it a federation. बर्तमान आम किछि एभली इंडियन फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स को डिस्कस करिबा जहाँकि भारत को गोटे फेडरेशन जी कि भारत को गोटे फेडरेशन भावे गोटे फेडरेशन स्टेट भावे गठित करे. ओके, सो यू नो अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. आम 7 फीचर्स डिस्कस करते एंड विथ दैट कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस भी बहुत गुड़ाए फीचर्स आम डिस्कस करते. सो नाउ विल अप्लाई दोज प्रोविजन्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बर्तमान आम कौन करबा से सब फीचर्स को भारत कॉन्स्टिट्यूशन पाई आम अप्लाई करबा. देखिबा जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो प्रोविजन्स गुड़िक मेंशन करा जायछि से सब प्रोविजन्स ए फेडरलिज्म फीचर्स को सैटिस्फाई करूची कि जदि करूथिबा देन वी कैन से यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी भी जगह रे फेडरेशन शब्द व्यवहार न करा गले मध्य इंडिया होची गोटे फेडरेशन. आ जदि नथिबो ताले आम इंडिया को फेडरेशन कहिबा नाही. आंसर विल बी क्लियर. ओके, सो लेट्स सी the provisions of the Indian Constitution. First one, the Constitution originally provided for a 2-tier system of government and later the 3rd tier of government in the form of panchayat and municipalities was added. जदि आम भारत कॉन्स्टिट्यूशन को भल भाव देखा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थिला, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट प्रोविंसेस. परवर्ती समय 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करागला 1992 रे. एंड यू नो दैट फर्स्ट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यह थिला जे एटलिस्ट 2 किंबा ताठू अधिका टायर ऑफ गवर्नमेंट निहाती थिबा दरकार. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया भारत रे से जिनस अछि देयर आर 3 टायर सिस्टम, देयर इज 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो दैट्स हाउ वी कैन से इंडिया इज ए फेडरेशन. नाउ लेट्स सी द सेकंड. ओके, मु डिफरेंट फीचर्स को डिफरेंट कलर रे मु पॉइंट आउट करछि. दैट्स व्हाई जदि क्वेश्चन आसे तुम मानको इजी हबो 7टी पॉइंट लिखिया पे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. तो फर्स्ट रीजन गला. नाउ लेट्स सी द सेकंड, दैट इज दिस डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन. आम डिस्कस करथिले डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction. प्रत्येक टायर सेपरेट जुरिस्डिक्शन थाए. सेम थिंग इंडिया रे भी सेम जिनस अछि. दिस डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन. थर्ड थिला जे जो सेपरेट जुरिस्डिक्शन अछि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट पाई कौन से सब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड की. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, yes, that is constitutionally guaranteed. How? Let's see. The constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative power between the union government and the state government. Okay, it is confused about it. 3-fold distribution of legislative power means union government, state government and local government. Confusion about it. Ei no. 3-fold distribution of legislative power between union government and the state government. Okay. सो एबे फीचर्स टू टिके डेप्थ को जीवा इन डिटेल्स आम डिस्कस करिबा 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. देन अगेन आम रिटर्न करिबा आमर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. सो लेट्स सी 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. फर्स्ट वन यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट. सॉरी गोटे छोट मिस्टेक है मु कनकरेंट लिस्ट को ऐड करिया पे भूली जाइछि. ओके, बट यू गो थ्रू द एनसीईआरटी यू विल गेट दैट. So first one is the union list, second one is the state list and third one is the concurrent list. Okay, third one is the concurrent list. Okay, so 3-fold distribution of legislative power. I have already told you जदि 7 शेड्यूल देखिबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा तमे यूनियन लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट एंड कनकरेंट लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट्स गुडिक पाइसिबो. इटे पिलांकर डाउट हुए व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स माने कोन?
देख जो आम एडमिनिस्ट्रेशन जो आम गोटे स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करूँ आम कौन एडमिनिस्ट्रेट करूँ आम क्या शासन करूँ आमको हेल्थ प्रति ध्यान देवार अच्छी आमको एजुकेशन प्रति ध्यान देवार अच्छी आमको लॉ एंड ऑर्डर प्रति ध्यान देवार अच्छी इंटरनेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी प्रति आमको ध्यान देवार अच्छी इट मीन्स ये जो आसला हेल्थ एजुकेशन लॉ एंड ऑर्डर ओके इंटरनेशनल इश्यू तो ये जो प्रत्येक क्षेत्र जहाँ ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन नेबार अच्छी से प्रत्येक क्षेत्र को कह जाए सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट्स गुड़ी को डिवाइड करा जाए क्या भितर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भितर तो सी सब सब्जेक्ट जहाँकि नेशनल इंपोर्टेंस लाइक डिफेन्स ऑफ द कंट्री फॉरेन अफेयर्स बैंकिंग कम्युनिकेशन एंड करेंसी ये सब को यूनियन लिस्ट इंक्लूड कराई एंड ओनली द यूनियन गवर्नमेंट okay only the union government can make laws related to the subject mentioned in the union list केवल union government ही ए subjects ऊपर law तैयारी करि परिबो ओके तो ये सब्जेक्ट्स गुड़ी को आम कहीं यूनियन लिस्ट रखीचे कहीं ना ये गुड़िक हूँ ये सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट उपर कौन गोटे यूनिफॉर्म पॉलिसी रहिबा दरकार थ्रू आउट द कंट्री ए मैटर उपर गोटे यूनिफॉर्म पॉलिसी गोटे सिंगल पॉलिसी रहिबा दरकार जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल इंपोर्टेंस ए सब्जेक्ट्स गुड़ी को यूनियन लिस्ट रखा जाइए सेकेंड State list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture, irrigation and the state governments alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. State list subject upare kebala state government ही decision नहीं पारिबो and third one is the concurrent list. What do you mean by concurrent list? Now it includes subjects of common interest to both union government as well as to the state government. यही किसी सब्जेक्ट अच्छी जमती आम ना एजुकेशन ओके जमती आम एग्जांपल नेबा फॉरेस्ट ओके ट्रेड यूनियन मैरिज एडॉप्शन सक्सेशन ए टाइप सब्जेक्ट को जदि आम देखा देन बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आउपरे लॉ तैयारी करबा दरकार बिकॉज बोथ को इंटरेस्ट को ये अफेक्ट करे बेस्ट एग्जांपल आम नहीं पारिबा एजुकेशन ओके देखो 3 लैंग्वेज पॉलिसी अच्छी किसी आम नेशनल इंपोर्टेंस दृष्टि आम किसी लैंग्वेज भी शिखुचे एंड आम स्टेट लैंग्वेज को भी शिखुचे ओके तो एजुकेशन उपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन रोचे एंड स्टेट भी अकॉर्डिंगली किसी किसी चेंजेस भी से आणुची ओके सो दैट इज द कनकरेंट लिस्ट एंड हु कैन मेक लॉस यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉस बट जदि कॉन्फ्लिक्ट आसे कौन से डिसीजन को लेकिन देन यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन प्रिवेल करिबो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्करेंट लिस्ट अदर देन दिस another subject is also there which is known as residuary subjects okay what do you mean by residuary subjects suppose कोटे मु एग्जांपल नेबी आजिकल देखथुबो साइबर थ्रेट बहुत होची बा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हमको दरकार लॉ तो किछि एभली सब्जेक्ट्स थिला जहा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करिवा समय रे से सब सब्जेक्ट्स सृष्टि ही नथिला परवर्ती समय इंट्रोड्यूस होती एंड से सब सब्जेक्ट्स को भी रेगुलेट करने आमको लॉस दरकार जदि एभली सब्जेक्ट्स किसी इंट्रोड्यूस होची आगो को ताहले से सब सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स अंडर रखा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज रिमेंबर यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स देखो ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स आमको जना पड़ुची जे इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज लिटिल बिट मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट क्षेत्र में पावर एंजॉय कर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट आसिले सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन फाइनल हम सेकेंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट केस रे मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट ही अधिक पावर एंजॉय कर सो दिस इज ऑल अबाउट 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर सो इजाए आम कौन कौन फीचर्स देखी सारे इंडिया फर्स्ट वन देयर आर 2 or more level of government second different tier of government has its own jurisdiction and third one the jurisdiction of the respective level of or tiers of government are specified in the constitution it is constitutionally guaranteed and then ame fourth asile sorry this is 3-fold distribution of legislative power under achi now let's see the fourth one okay next one is we noted about that most federations that are formed by
Most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy a special status. Okay, so let's discuss. Think about holding together federations. आम जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डिस्कस करते मन पकाओ आम डिस्कस करते जे भेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हाफ अनइक्वल पावर आम बहुत कम देखा पाचे से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रे किछि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मानकु अनइक्वल पावर बा किछि स्पेशल पावर दिया जाई था ये पॉसिबल सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर किछि किछि यूनिट्स को स्पेशल पावर भी दिया जाई था कहीं ना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दृष्टि ओके बेस्ट आम देखा इंडिया रे जदि आम देखा सेम यू कैन सी आसाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिजोरम दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ओके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 371 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 371 अंडर रे ए सब स्टेट्स माननकु जेहेतु पिक्युलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटीज ओके बहुत गुड़ा डाइवर्सिटीज जेहेतु स्टेट्स मानकर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दृष्टि ए स्टेट्स गुड़ी को बहुत गुड़ा स्पेशल पावर दि जाइए जमती आम कहीपर टू प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट ओके देयर कल्चर ओके प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस ये सब आम देखिपर ओके ये सब डिसीजन क्षेत्र में बा ये सब गोटे गोटे एग्जांपल जहाँकि बा जो सब स्पेशल प्रोविजन्स बा जो सब स्पेशल राइट्स दिया जाइए क्या ना किछिटा स्टेट्स आसाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश ओके सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एक्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स एज वेल आहरी भी अन्य स्टेट्स अच्छी जो मानक ये स्पेशल प्रोविजन्स दिया जाइए ओके तो ये सब डिस्कसन बा ये सब प्रोविजन्स को देखिले लगे जे हाँ इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस फीचर्स को भी satisfy करछि ओके देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन व्हिच एंजॉय वेरी लिटिल पावर एंड दिस आर एरियाज व्हिच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट किछि एभली भी इंडिया रे स्टेट्स अछि बा किछि एभली एरियाज अछि जहाँकि गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हो पारे ना कहीं बहुत स्मॉल जमी आम एग्जांपल नहीं पार चंडीगढ़ लाक्षाद्वीप कैपिटल सिटी दिल्ली तो ये छोट छोट एरियाज गुड़ी को भी आम कहीपर स्पेशल पावर भी दि जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट आपरे कंप्लीटली पावर एंजॉय कंट्रोल करिबारे ओके तो ये सब एग्जांपल आम कहीपर इंडिया सैटिस्फाई वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो आम इंडिया को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अंडर रे आम क्लासीफाई करूँ ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर that is the sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make change to this power sharing arrangement. Remember आम डिस्कस करथिले fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. This is a major feature of federalism. Fundamental features को केही गोटिए लेवल रो गवर्नमेंट यूनिलेटरली चेंज करि परिबो नाही एंड फंडामेंटल प्रोविजन्स मु बहुत गुड़ा एग्जांपल देइथिली फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज देन सेक्युलरिज्म ओके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन जुडिशियरी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सब आमर फंडामेंटल प्रोविजन्स रे आसे तो ये एग्जांपल कहार नि ना फेडरलिज्म ओके फेडरलिज्म माने कौन ना शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो फेडरलिज्म और शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ये आमर बेसिक स्ट्रक्चर एंड एथिरे कौन कह जाउची इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आपको आम एते सहज रे चेंज करि परिबा नाही इट मीन्स अगेन इट सैटिस्फाई अनदर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जदि आम चाहू जाको चेंज करिया पई कोन ता पई प्रोसीजर कोन हियर इट इज मेंशन 2-3 मार्क क्वेश्चन आसी पारे कोन पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट any change to this any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority प्रथमे कौन करिवार अछि 2 houses of parliament लोक सभा एंड राज्य सभा रे with 2/3 majority ए बिल टी पास हबा दरकार एंड आफ्टर दैट आमर टोटाल स्टेट जेतिक अच्छी तार हाफ इट मीन्स 28 स्टेट टोटाल अच्छी एटलिस्ट 14 स्टेट रो स्टेट लेजिस्लेचर रे भी ए बिल टी रेटिफाइड हवा दरकार
Again I am telling you basic structure केमती change हो पारिबो. First any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority, then it has to be ratified by the state legislatures of at least half of the total states. Total state ro half, it means 20 divided by 2, 14 state ro state legislature रे at least a bill टी ratified हेबा दरकार. Then only आमे एथिरे किछि चेंजेस आनी परिबा. So ए प्रोविजन्स रो हमकु लागुची yes the fundamental provisions of the Indian constitution cannot be changed unilaterally. The last one, the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedures in case of any disputes about the division of power. The high courts and the Supreme Court make a decision. पढ़िथिले आमे court have the power to interpret the constitution. Highest court act as an umpire, and India रा highest court किए ना Supreme Court. Supreme Court and High Court decide करिवे. Okay, Supreme Court will take the decision. Supreme Court act as an umpire if disputes arise between the central government and the state government. तो ये सबुरु आमको लागुचे, सब फीचर्स रो लागुचे से yes India is a federation. The union and state government have the power to raise, last one, the union government and the state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to them. Particularly sources of revenue of each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Different level of government को financially autonomy करिया पे sources of revenue को भी constitutionally specify करिवा दरकार. Again this is mentioned in our Indian constitution. तो ये सब features को जेतेबेले आमे analysis करूचे आमे कहि परचे yes यह तो संपूर्ण सत्य जे भारत पा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनोसी भी पार्ट रे फेडरेशन शब्दर व्यवहार करा जाय नाही. डेलिबरेटली ताको अवेयर थिबा सत्य भी फेडरेशन शब्द को डेलिबरेटली यूज करा जाय नाही. यूज करा गला न गले मध्य यूज करा न जाइथिबा सत्वे आमे भारत को गोटे फेडरल स्टेट आमे कहि परिबा. सो नाउ आई होप कि आपण बुझी पारथिबे व्हाट makes India a federal country. Okay, at last we will see some previous questions. Okay, so how is the power divided between state and center? Threefold distribution of legislative power. Direct question. How special provisions are provided to some of the states in India? Article 371 को explain करके तमे लिखि पारिबो. It's a 3-mark question. Next, do you agree with the statement that central government is more powerful as compared to the state government? Yes, central government is more powerful as compared to the state government. कौन देखिले आमे देखिले रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स रे आमे देखिले कनकरेंट लिस्ट कथा देखिले बा जेतेबेले आमे कहूचे यूनियन टेरिटोरीज कथा आसी यूनियन टेरिटोरीज को एडमिनिस्ट्रेट करिवारे भी पावर एन्जॉय करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट. मु तीनटा एग्जांपल देली. ओके, इफ यू नो द मोर एग्जांपल्स देन कमेंट मी और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन रे को आउ कौन सब्जेक्ट रे सेंट्रल गवर्नमेंट अधिका पावरफुल बा अधिका पावर एन्जॉय करे एज कंपेयर टू द स्टेट. ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक यू हैव टू मेंशन एट लीस्ट 3 पॉइंट. ए 3टा पॉइंट को तुमको एग्जाम रे लिखिबार अछि. टेकिंग दिस 3 एग्जांपल यू हैव टू प्रूव दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट. इफ यस एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. ओके, गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला. मु कहिथिले आमे एक वीडियो रो लास्ट डिस्कस करिबा, दैट इज व्हाई इंडिया इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए क्वासी फेडरल स्टेट. ओके, कहिथिले आमे डिस्कस करिबा व्हाट डू मीन बाय क्वासी फेडरल स्टेट. क्वासी फेडरल स्टेट मीन्स आमे कहीं इंडिया को कहूचे क्वासी फेडरल स्टेट. आमे इंडिया को एथिपई क्वासी फेडरल स्टेट कहूचे कहीं ना इट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट. जदि आमे यूएसए सहित कंपेयर करिबा, यूएसए रे कौन थिला दैट इज both constituent states and the central government. Okay, both have equal power and are strong as compared to the federal government. पढ़ी but से जिनस इंडिया रे नहीं. इंडिया रे सेंट्रल गवर्नमेंट इज more powerful as compared to the state government, and that's why India को हमें कहूचे it is a quasi federal state. Okay, remember that. Exam point of view I don't think important, but you should know. Next, why did the makers of our constitution declare India to be a union of state?
एट फास्ट आम डिस्कस कले यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर स्टैंड ताकू नहीं कि भी तुम एक्सप्लेन करि पारो एग्जाम रे नो वरीज then why were some sub-political units of India given a special status okay question combine ही आसी पारे question डी अलगा भी आसी पारे why were some sub-political units of India given a special status okay कहीं ना from the administrative convenience दृष्टि जेहेतु से माने बहुत diverse से मानकर language बहुत diverse okay बहुत गुड़ाए diversities रही थिबा जोगु हमको एडमिनिस्ट्रेशन रे प्रोब्लेम हुए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू रे ही आमे किछिटा सब पॉलिटिकल यूनिट्स को आमे स्पेशल स्टेटस दो बा तुम यूनियन टेरिटरी एग्जांपल नहीं कि भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करि परिबो एट लास्ट व्हाट मेक्स इंडिया a federal country okay no need to explain this question because the whole video amara ajiro pura total session hi question upare base thila so this is all about today's session I hope ki apan mane bhal se bujhithibe again we will again meet another video ra me misiba and next we will discuss that is how is federalism practiced in India okay thank you very much.